SGX IPF Trust and supported by Solvent Exchequer Association of India, SEA. And we had a module 1 on last Saturday, where about 100 people had registered over there, and more than 50, 60 people have attended the show. On a second module, we have Mr. Sumit Gupta, the market specialist. He is a veteran in the industry, and Mr. Gupta is very much aware and having expertise how to deal in a volatile situations. Please be with us for some 2 minutes more, because we are waiting for some more attendees who are very much keen to join. We have already, as of now, we have already 21 attendees on our screen, and we will start very soon. Please be with us. Sumit sir, what do you suggest? Should we start now? Hi, good morning. I think we can start, maybe. If you are comfortable, we can start now. Yeah, we have a good number of attendees as of now. We have 22 attendees we can see on our screen. And we are waiting for the participants for since last 5 minutes. Okay. Being an expert lecturer and professor of the show, I should go with your views. The professor is strict or want to give some time to the participants? Look, I will say everyone who is taking time out on Saturday is taking out time from their taking the time out of their family time. So I think whatever you say, I mean, if you want to wait for a minute more, we can do that. Otherwise, when you will tell me, I'm ready to go. Yeah, so let me start your introduction to the participants. Meanwhile, we will wait for 1 or 2 minutes and then we will start. Okay, sir. So, okay. Dear all attendees, Mr. Sumit Gupta is having more than, you can say, the 2 decades of experience in this market. McDonald plays the company he is having control over there. And not only that, Mr. Gupta is also in the industry to give the expertise and his views in terms of hedging. And he is also having hedging as a good practice since last, you can say, the 3-4 years. So, Mr. Gupta, please start your lecture now and give your inputs, because now we have more than 25 attendees as of now. Please, sir. Yeah. Hi, good morning, everyone. First, thank you for taking time out on Saturday. I am starting this technical presentation on futures and options and hedging with a very non-technical quote to say luck is what happens when preparation meets opportunity. Because most of the time,
when we make money in futures and when we go right, we say we were lucky. And what is more important is consistency to be lucky. And that will not come from probability of 50% being right or wrong. It will come from preparation by knowing the future contracts better, by knowing the hedging mechanism better, so that once we need these products, we should be in position to use them in a right and appropriate way. How this presentation is structured, there are various parts to it. We will, in first 60 minutes, maybe first hour, we will try and cover the presentation. In next 30 minutes, we can have questions regarding the presentation, and maybe after 30 minutes or 15, 20 minutes, we can have a question incidental to futures and options and other products which may not be covered in this presentation, so that the participants can have a full view on the topics covered in the presentation and maybe what additionally can be covered. I will start with the fact that what we have done in last session, session 1, this case study was discussed and the concept of futures, hedging, basis, and cash flow, inflow, outflow, and impact of hedging on P&L, companies and corporate hedging policy was discussed by the medium of this case study. And it was done in great detail, so that the first assumption is that all the participants are aware of what is hedging, number one. Number two, what is basis and what are the risks associated with it. Because what we are going to do is in this presentation is to build over what we have discussed in the last presentation. So the thought that I have started with is to explain what is risk and what is exposure, what is probabilistic thinking while we trade futures, how we can look towards the consistency of returns, why it is important to understand risk before hedging risk. Because if we will not understand risk, we can hedge anything, we can sell any future, it will be equally risky position. Because 90% of the market goes wrong in risk assessment because they don't assess the right risk, they don't understand the right risk. And the focus of this presentation to help all of us assessing the right risk and then taking steps to offset those risks. Then I have started with the story of the first option contract, which was traded around 3000 years back, spot and futures market, hedge and cross hedge. From here, we will get little technical. What I have done, I have not included any formula in the presentation because as you include mathematics, the interest of people goes down. So what I have done, I have explained the same concept, which is technical in nature, but in pure English, so that the participants who don't have a mathematical background also understand these important concepts. What is the minimum variance ratio and why it is important? What is basis risk and role of discipline in understanding futures option trading it? And without discipline, all the other points discussed in this presentation have no meaning. So this is where we are going to cover the major crux or major content of today's session. And thank you once again for taking time out on your busy Saturdays. I will start with, again, a very colloquial diagram that what is risk. The standard definition of risk can be, it is uncertainty. People may say it is chances of things going wrong. But if we look at it in pure financial terms, it is chance, that is probability, that an outcome on investment, actual gains or losses will differ from the expected outcome or return. What I mean to say, one, risk is planned. That means you are getting into a transaction, you are getting into a situation where you know what you are getting into. And this is where the difference in outcome is the one which defines what is risk. So if the outcome is different from what was planned, then we say we got stuck, or we had a chance, or we have a risk in this transaction.
So risk, very simply put, is a probability of an outcome which is different from expected return or expected outcome. So it is a deviation or change between your plan and the final outcome. Just to give it in example terms, for example, we expect soybean prices to go down from here, and we sold 5,000 tons of soybeans, believing in November crop will be good and we will have we will get good financial return by selling soybeans at 5,500 rupees. Now it stops raining, monsoon goes bad, global market goes up, and soybeans, instead of going to 5,500, it goes to 7,500 rupees. So there is a deviation in our expectation and the returns that we have got. And it is because of the risk, macro risk, commodity risk, fundamental S&D, and not hedging our risk, because we were not aware what this risk were, because we were so sure. And that is the biggest problem in the commodity segment, because most of the people will ask this question, what do you think, market will go up or down? And people will say, oh, I'm sure market is going up. You can be long. Rather, this is not the right way of approaching the markets. You should always take it from the probability point of view. The chances of market going up is higher. मार्केट ऊपर जाने के चांस अभी ज्यादा हैं देन मार्केट नीचे आने के. इसीलिए प्रोबेबिलिटी टर्म्स में बोलना, मेरे हिसाब से 60% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंड 40% चांस है कि मार्केट यहाँ रह सकता है, नीचे आ सकता है. वो 40% चांस है कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बदल दे, इफ ग्लोबल, अगर यूएस में बहुत अच्छा रेन हो जाए, बारिश हो जाए, यूएस एसएनडी चेंज हो जाए, इंडिया के अंदर मान लीजिए बर्ड फ्लू आ जाए, तो ऑल दिस फैक्टर्स कैन चेंज द your outlook on S&D which you have built today. So it is very important, whenever we look at commodity, whenever we look at prices, always look at commodity from a probability point of view. Never ever give an absolute answer that okay, it is going up, my target is this kind of thought process is more technical outlook, technical trading point of view, where you put price targets. But again, that is not sure. That is always a probability that the chance कि ये market यहाँ तक जा सकता है. The entire purpose of this slide is to say कि जब भी हम hedging में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि price मूवमेंट एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है. प्राइस मूवमेंट इज वेरी रिलेटिव. प्राइस मूवमेंट इज प्रोन टू रिस्क, बिकॉज आगे का जितना पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है, इट इज अबाउट एनालाइजिंग दिस रिस्क, अंडरस्टैंडिंग दिस रिस्क, मिटिगेटिंग द रिस्क. क्योंकि जब रिस्क मिटिगेशन का पार्ट आता है, देन ओनली द डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड हेजिंग कम्स इनटू पिक्चर. मिटिगेशन से पहले हमको रिस्क एनालाइज करना है, रिस्क समझना है. ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड आई विल लाइक you to see, look at the numbers on this slide for 30 seconds. On left hand side, अपने left hand side पे different asset है. Let's say A, B, C, D, E. आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं. सोयाबीन, ऑयल, चना, wheat और corn. और ईयर 2, ईयर 1, ईयर 3, ईयर 4, इनके पिछले 5 साल में क्या रिटर्न रहे हैं, कितना % रिटर्न इन्होंने दिया है. एंड आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ये 3 सवाल पूछिए आप अपने पास से कि आप किस एसेट के अंदर पैसा लगाना चाहेंगे. इनमें से कौन सा एसेट सबसे रिस्की है और कौन सा एसेट फॉर श्योर होने वाला है, कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है. प्लीज लुक एट दिस नंबर्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम ये देखते हैं, अरे स्टॉक ने पिछले बार 100% रिटर्न दिया है, सोयाबीन के प्राइस 100% रैली हो गया है, इसका मतलब ये क्या है कि ये कमोडिटी तो is going to give significant returns, it's going to go up. These numbers are just notional. Don't take it as 100% reduction, it takes as 50%. These numbers are just notional to explain the concept to each one of us. Please look at this number, these number for 30 seconds. If somebody wants to answer on the chat menu कि आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग.
ओके, लेट्स कम टू द आंसर पार्ट। अगर हम ये पांचों एसेट को देखेंगे, इन सब का रिटर्न 5 साल में लगभग 64% रहा है। एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, एसेट 5, ABCDE 5 साल के अंदर। इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 12.5% पांचों एसेट ने रिटर्न दिया है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट ए इज ओनली 2.5%। इसका मतलब ये है कि एसेट ए कंसिस्टेंटली 12.5% आपको रिटर्न दे रहा है और इसका जो डिविएशन है वो बहुत कम है। इसका मतलब है चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ रिटर्न लेस देन 12.5% इज वेरी लिमिटेड। जबकि अगर हम एसेट डी देखें, उसने पिछले साल 114% रिटर्न दिया। हमको लगा अरे ये तो सोयाबीन है, ये तो डबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट ये इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन 105% है। इसका मतलब ये एसेट आपको -50% रिटर्न भी दे सकता है, 100%। ऐसे इस एसेट में आप कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी लुक एट सच अ हाई वॉलिटिलिटी, दैट मीन्स हमारा चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज वेरी हाई। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम ऐसे किसी एसेट और ऐसे किसी कमोडिटी को देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है ये एसेट, जबकि एसेट ए वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अगर आप किसी स्टॉक में या किसी कमोडिटी में देखते हैं, अगर कोई एसेट बहुत कंसिस्टेंट है, ईयर ऑन ईयर जो आपको रिटर्न देता है, इसका मतलब क्या है कि आप उस एसेट के अंदर पैसा लगाना चाहेंगे जो एसेट आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न दे, जिसकी वॉलेटिलिटी कम हो, जिससे एसोसिएटेड रिस्क कम। अगर हम एसेट सी देखें, वो लगातार कंसिस्टेंट है पैसा गंवाने में, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी लो। दैट मींस आपको श्योरिटी है कि वो पैसा गंवाएगा ही गंवाएगा। सो इफ यू हैव टू इन्वेस्ट मनी फॉर श्योरिटी एज सेफ हेवन एज टू मिनिमाइज रिस्क, you will go for asset A. If you like casinos, you like to toss up the coin, आपको लगता है कि मेरे को मजा आता है केवल कि आज बाजार 100 रुपया ऊपर और आज 100 रुपया नीचे, तो आप एसेट डी में लगाएंगे। हालांकि उससे आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, लेकिन थ्रिल मिलेगा। एंड whenever we are in financial transaction, it is not about thrill, it is about how much return we can generate. And this is the main purpose of last 3 slides, is to understand कि हम आज के बाद कभी भी किसी भी एसेट को देखेंगे, कमोडिटी को देखेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसका लास्ट ईयर का रिटर्न क्या था, लास्ट एक हफ्ते का रिटर्न क्या था, जबकि हम ये देखेंगे कि उसका लास्ट 5 साल का रिटर्न ईयर ऑन ईयर कैसा था, डे ऑन डे कैसा रहा, उसका मीन क्या है। मीन होता है एवरेज, मीन होता है एवरेज। ओके। और इसके अलावा अगर आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर जैसे आपके पास आज ऑप्शन है कि मेज है, बाजरा, जब सोरगम, 5 कमोडिटी आप स्टॉक कर सकते हैं। तो उसके अंदर मेज प्राइसेस रिलेटिवली वॉलेटाइल हैं, बाजरा के प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल चलते हैं। तो दिस इज ए एग्जांपल टू शो कि हमको जब भी हम कमोडिटी की तरफ देखेंगे, तो उसको रिस्क के एंगल से देखेंगे, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से देखेंगे। आज हमारे पास ऑप्शन है पाम ऑयल, सोया ऑयल, सन ऑयल करने का, या तो हम उसके अंदर देखेंगे कि किस कमोडिटी का जो रिटर्न है रिलेटिवली स्टेबल रहा है, जबकि कई कमोडिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती हैं। दिस इज द एंटायर पर्पस, इज टू अंडरस्टैंड, टू थिंक इन प्रोबेबिलिटी, थिंक इन रिस्क टर्म्स, थिंक फ्रॉम द स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका डिविएशन, इसका टोटल मूवमेंट ओवर द मीन क्या रहा है। सो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर हम समझें, हम सब या तो प्रोसेसर हैं या यूजर हैं। अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस फिक्स्ड है और हमारी आउटपुट के प्राइस का फिक्स है, तो हमको कोई रिस्क ही नहीं है कि हमको 5 रुपए पे मक्का खरीदना है और 12 रुपए पे हमको ब्रॉयलर को बेचना है, या हमको रॉ सीपीओ खरीदना है $1000 पे और रिफाइंड बेचना है $1100 पे। अगर प्राइसेस फिक्स्ड हैं तो हमको कोई रिस्क नहीं है, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेजिंग। व्हाई हेजिंग एंड रिस्क कम इनटू पिक्चर? जब या तो हमारा आउटपुट का प्राइस डिफरेंट हो या हमारा इनपुट का प्राइस चेंज होता हो। दैट मींस कि मान लीजिए हम ब्रांडेड कंपनी है, हम बिस्किट बेचते हैं, हमारा आउटपुट का प्राइस तो फिक्स है कि हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्राइस फिक्स्ड हो गया है,
लेकिन उसमें जो इनपुट है लाइक व्हीट, शुगर, वेज ऑयल, उनका प्राइस रोज चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, अगर उसका भाव ऊपर गया है और आपका प्राइस फिक्स्ड है एमआरपी से, दैट मीन्स आपका मार्जिन घटता हुआ जाएगा, आपका प्रोक्योरमेंट बजट खराब होता हुआ जाएगा। जबकि अगर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बजट के अगेंस्ट यू आर डूइंग बेटर। बट द आइडिया इज नॉट टू लीव इट टू चांस कि मार्केट ऊपर गया तो हमको फायदा हो जाएगा, मार्केट नीचे आया तो हमको नुकसान हो जाएगा। आइडिया ऑफ एंटायर कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इज टू टेक दैट वॉलिटिलिटी आउट, कि हम उस जो तेजी मंदी को फ्लैटन आउट करें। हाउ वी कैन मेक आवर परचेजेस रिस्पेक्ट टू आवर सेल प्राइस by using right tools, that is future and options, कि हम उस प्राइस को स्टेबलाइज करें, उससे वॉलिटिलिटी हटा दें। तो अगर हमारा आउटपुट प्राइस फिक्स नहीं है और हमारा इनपुट प्राइस फिक्स नहीं है तो हमको रिस्क है, और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमको वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड the entire process through which we will do is risk management process. First, as we have discussed, is identification of risk. रिस्क है क्या? जो हमने पिछली बार देखा कि डिफरेंट एसेट हैं, उनकी मूवमेंट क्या है। हमारे बिस्किट के अंदर राइस, शुगर, व्हीट, ये सब जाता है, तो उसके अंदर उन कमोडिटी का प्राइस वॉलेटिलिटी कितना है, किस कमोडिटी का प्राइस सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, मेरे को किस कमोडिटी का प्राइस हेज करना है। सेकेंड, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है कि ये रिस्क कितनी बार होता है, क्या इस रिस्क होने से मेरे को फायदा होता है, नुकसान होता है, इस रिस्क से मेरे को कितना नुकसान हो जाता है, वो हम वैल्यू एट रिस्क को एनालाइज करते हैं। उसके बाद जब हमको रिस्क असेसमेंट हो गया, हमको रिस्क समझ में आ गया, फिर हम देखते हैं कि रिस्क मिटिगेशन क्या है। द एंटायर प्रेजेंटेशन जो ये है, इट इज अबाउट रिस्क मिटिगेशन, कि हम कैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के टूल्स को इस्तेमाल करके हमारे कमोडिटी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमको अपने रिस्क को लगातार मॉनिटर करना है और अपने रिस्क प्लान को कंटिन्यूसली अपडेट करना है, बिकॉज विदाउट दैट हमने एक बार कर लिया, अगली बार हम वो गलती दोबारा दोहरा सकते हैं। तो it is very important we have a good risk policy, जो according to SEBI mandate, according to the latest accounting FASB mandate, it is very important कि हम अपने commodity risk को समझें। Banks, other institutions are not allowed to trade commodities because a lot of them don't understand the commodity risk. And it is and अगर हम आज यूजर, there are different categories, traders, processors, manufacturers, different participant in supply chain, सबका अपना एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क होता है। एक प्रोड्यूसर का रिस्क है, फार्मर का रिस्क है कि उसने क्रॉप उगा लिया, उसे बेचना है, ही इज ऑलवेज लॉन्ग। एक प्रोसेसर का रिस्क है कि उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसके पोल्ट्री को कॉर्न और सोयाबीन खाना है, ही इज ऑलवेज शॉर्ट। जो एक मैन्युफैक्चरर का रिस्क होता है कि उसको मटेरियल प्रोड्यूसर से खरीद के कंज्यूमर को बेचना है, ही इज ऑन बोथ साइड्स, उसको प्रोडक्शन प्राइस रिस्क भी है, सेलिंग प्राइस रिस्क भी है। तो इट इज तो ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो हैं सप्लाई चेन के, वो अपने रिस्क को डिफरेंट तरह से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, हेज करते हैं, मिटिगेट करते हैं, और उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाते हैं। एक सिंपल स्लाइड जिसमें हमने कोशिश की है कि हम रिस्क असेसमेंट को समझा सकें। रिस्क एक्चुअली, दोबारा हम उसी प्रोबेबिलिटी थिंकिंग पे आए हैं कि रिस्क क्या ये कभी कभी होने वाली चीज है, या कभी बहुत ही 10 साल में एक बार होने वाली चीज है, या ये चीज हर रोज होती है। दैट इज रेयर टू ऑलमोस्ट सर्टेन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। देन व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ आउटकम, कि उसके कारण मेरे को छोटा नुकसान होता है, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे खतरनाक जो चीज है वो है पॉइंट नंबर 1, द रिस्क विच आर सिवियर and the risk which are common, like S&D, the world commodity prices चेंज हो गए, एमपी के अंदर बारिश नहीं हुआ, सोयाबीन प्राइसेस चेंज हो गया, मलेशिया के अंदर ड्राउट हो गया, अर्जेंटीना के अंदर मील प्राइसेस बहुत ड्रॉप कर गए। सो ऑल these things will lead to major supply and demand and price risk to us. As a processor, it can take us away from the business. As a consumer, it can make our business unviable or negative. As a producer, अगर हम एमपी के अंदर सोयाबीन प्रोड्यूसर हैं और ब्राजील के अंदर बम्पर क्रॉप आता है, यूएस में बम्पर सोयाबीन क्रॉप आता है, तो माय प्रोडक्शन माय प्राइस ऑफ द आउटपुट
can go down. So इस risk को, which is very common and very severe, हमको hedging के through हमको mitigate करना पड़ता है. Why hedging is important? क्योंकि हमारा business है प्लांट चलाना, कंजम्पशन, प्रोसेसिंग करना, और उस रिस्क को हम एक ऐसे आउटकम के लिए ओपन नहीं छोड़ सकते जो रोज चेंज हो रहा है, एंड इट कैन टेक अस आउट ऑफ द बिजनेस. द सेकंड काइंड ऑफ रिस्क इज सिवियर एंड रेयर, लाइक कोविड. इट हैपेंड वंस इन अ 100-year थिंग. For those kind of things we cannot plan, but we can have a strong risk management philosophy कि अगर ऐसा कुछ situation build होता है जो बहुत ही severe है और rare है, I will go out of market. I will reduce my exposure to commodities. I will try uh, and reduce my exposure to commodities. इस काइंड ऑफ रिस्क में जो सबसे बड़ा मिटिगेंट होता है वो आपका रिस्क रिड्यूस करना, आप हंकरिंग डाउन, अपने पोजीशन को कम कर देना, अपने नेट आउटस्टैंडिंग को कम कर देना, अपने क्रेडिट सेल्स को बंद कर देना. सो दिस इज अ रेयर रिस्क जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो आप नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस के अंदर नहीं लेते, या आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का यूजुअली हिस्सा भी नहीं होते, लेकिन रिस्क फिलॉसफी का हिस्सा होते हैं, जिसमें आपको ये समझ में होता है कि अगर ये हुआ, इस टाइप का एक 100-year आउटकम हुआ, तो मैं क्या कर सकता. देन माइल्ड एंड कॉमन रिस्क विच हैपन एवरी डे, आपके करेंसी चेंजेस होते हैं, क्रेडिट मार्केट चेंज होता है. These risks also can be mitigated by a smart risk management philosophy policy, जिसमें आप you define कि अगर forex 1% से ज्यादा मूव होता है, I will go for hedging, और I will hedge my risk. या फिर if there is a change in government policy, उसके against में क्या करूँगा. Then mild and rare, which happens once in a lifetime and which has no financial impact on us. Like for example, central में government बदल गया. Because of that, there can be some export policy changes or policy changes, but it may not be directly or indirectly related to us. So we have to keep an eye on it, but we don't have to lose a sleep on that. So it is very important कि हम कोई भी रिस्क देखें उसको इस चार एक कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डालें. जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए इसके अलग अलग एग्जांपल देता हूँ. यूएस में अगले 15 दिन बारिश ना होने की उम्मीद है. इट इज अ सीवियर एंड कॉमन रिस्क. हो सकता है बारिश नहीं होने से क्रॉप कम होगी, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ सकते हैं. उसके कारण अगर मैंने कोई फ्यूचर सेल की हुई है तो आई में लूज मनी. अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरा इनपुट प्राइस ऊपर जा सकता है. अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे को अच्छा भाव मिल सकता है. अब इसको मिटिगेट करने को, रिस्क मिटिगेट कौन करता है? जिसको रिस्क है. अब प्रोड्यूसर है, अगर भाव ऊपर जा रहा है उसके लिए तो पॉजिटिव आउटकम है, बट लेकिन एक कंज्यूमर और प्रोसेसर के लिए नेगेटिव आउटकम हो सकता है. एंड दे नीड टू हेज देमसेल्फ टू अंडरस्टैंड, वंस दे अंडरस्टैंड दिस रिस्क एंड एनालाइज दिस रिस्क. सेकंड, we are coming out of COVID. Do we need still COVID protocols? Yes, we need to have it. We need to keep our outstanding limited till the time we are sure that large part of the population uh, is vaccinated. कि हम कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से वी आर कमिंग आउट, आवर इकोनॉमी स्टार्ट ग्रोइंग बैक एट 10%, देन वी कैन टेक अवे दिस कोविड प्रोटोकॉल्स, बट नॉट टुडे. करेंसी लास्ट 15 दिन में बहुत वॉलेटाइल रही है. इट हैज गॉन अप फ्रॉम 7250 टू 7480 yesterday. दैट मींस 3% मूव. तो अगर आपने $600 के ऊपर फ्यूचर की कोई सोयाबीन मील की सेल की हुई है, दैट मींस यू हैव गेन्ड $18. और अगर आपने ऑयल इंपोर्ट किया हुआ है मान लीजिए $1000 पे, दैट मींस योर परचेज प्राइस इन INR हैज गॉन अप बाय $30 a ton. तो ये रिस्क को हमको बहुत समझने की जरूरत है और इसको लगातार इम्बाइब करके समझ आगे चलने की जरूरत है. And risk policy should cover all that, because risk policy should cover all these aspects, because one thing risk market is going to go up or go down, because that's the first part of the presentation. We cannot be sure it is going up or going down. So we need to have a risk policy which covers all these points and take care of all these aspects. So I will start with an interesting story, because most of the people think what is futures or option 1970s से चालू हुआ है.
There was a philosopher by name of Thales of Miletus in Greece in year 500 BC, and he was walking on the road, and he was a philosopher. That means he was a lover of knowledge, and he was not rich. So he was looking at stars. He was famous for astrology. He was looking at stars and he fell down. And the person next to him started making laugh of him, saying, "Look, you are stargazer and you don't know anything about the real world. You can never make money." Now, this person, since he has a very good knowledge of astrology is the wrong word, he has a good knowledge of the weather patterns. He estimated, basis the current weather pattern, the next year olive crop is going to be huge. He raised some money, little money, and he went back to every oil processor in Greece and bought an option from them to process oil in their factories. Basis his analysis, next year olive crop became huge and he made a lot of money. Why? He has bought an option. What is an option? Option is a right. Option is an option to buy, is a right, not an obligation to buy something at a given price. So it gives you flexibility. He has not bought a future. He has bought an option, because option gives you a much wider coverage. It gives you a higher leverage. So this is a first recorded history, future contract or a derivative traded, which was 2,500 years back. So this is a new not a new concept. ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत समय पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं. भगवान कृष्ण इन भगवत गीता said the same thing, that world is relative, world is not absolute. So these are the things that we have been learned in colloquial language, not necessarily in the technical language that we are using today to explain it as a financial concept. And what is more important for us to understand is that there is a lot of history behind the learning that we have. The futures and option and risk assessment became popular by the gamblers because उनको ये समझना था कि मेरे को क्या risk हो सकता था. And over period of time, casinos perfected the art because they understood कि risk क्या है and they have the right risk mitigation practices and they always make money. So the institutions, the companies, people, trader, processor, whoever write risk mitigation policy, risk assessment methods, they are expected to do better than others. Their profits in a great year will be good. Their losses in a very bad year will not be that bad. So that means they will make little less money and they will lose a lot less money than the normal people. And that leads to consistency of business. If you look at all the businesses which are doing well in last 100 years, they have very strong risk management policies. The companies that try and make quick money, they take bigger risk. And when they take bigger risk, they end up losing a lot more money than they were expected to make. So the entire notion is not to, I'm not at all saying you don't take risk. The only point I'm saying, you should understand your risk till here. And once you will understand your risk, you will know when you have to hedge your risk. So a lot of time we discuss on phone with our customers and they say कि भाव ऊपर जा रहा है, भाव नीचे जा रहा है. What is price? A price is a number where a buyer is ready to buy and a seller is ready to let go his cargo. If the buyer needs cargo more than the seller, prices will go up. If seller needs to sell cargo more desperately, then prices will go down. It is a simple factor of supply and demand situation. And the futures market is a tool, is a platform where we define future prices. It is a method, it is a place where both buyer and seller come and exchange their ideas of a future price, where they expect कि आज से 4 महीने बाद का भाव क्या हो सकता है, और वो volatile होगा. It will have lot of changes. It will be uncertain because no knowledge is perfect. Every day we gain more knowledge और वो knowledge market के अंदर incorporate होती है.
आज के दिन में हमारा नॉलेज ये है कि इंडिया में बारिश मानसून का बहुत अच्छा नहीं हो रहा, सो देयर इज अ रिस्क प्रीमियम, मार्केट इज गोइंग अप। कल गवर्नमेंट ने पल्सेस के ऊपर स्टॉक लिमिट ला दिया, बिकॉज दे आर ऑल्सो सीइंग दिस थिंग। बट इफ it rains, it starts raining in next 15 days, the entire outlook for the market will change, and it will impact future prices more than the spot prices, because spot prices आपकी आज के सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि फ्यूचर प्राइसेस आपके फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को डिसाइड करता है। एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट फॉर हेजिंग, कि हमने अभी तक रिस्क समझा, हमने समझा फ्यूचर प्राइस के अंदर एक एलिवेटेड रिस्क होता है, एक एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस होते हैं। और जब हमने प्राइस डिफाइन किया, व्हेन वी आर डिफाइनिंग प्राइस फॉर फ्यूचर, वी आर ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन किसी का, एंड वी आर ट्रेडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट। जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा भी हो सकती है, when the spot market prices will realize in spot, or they may be ill founded, वो wrong भी हो सकती है, but on a given day it is the right price. Nobody can say that this is price is not right price if there are sufficient number of buyers and seller present. That means it is the expectation of the entire market, it is the expectation of large share or large portion of market. So what is the difference between speculation and hedging? This is a very important concept, because speculation हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, hedging हम risk को mitigate करने के लिए करते हैं। hedging के अंदर हम protection के लिए जाते हैं, और को quick money बनाना है इसलिए जाते हैं। हम risk aversion insurance खरीदने के लिए hedging करते हैं, जबकि as a speculator हमको अपना मैक्सिमम रिटर्न बढ़ाना है इसलिए कर रहे हैं। और इन दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। एक प्रोसेसर हेजिंग करता है, जबकि एक ट्रेडर ऑन अ गिवन डे ही इज अ स्पेकुलेटर। एक आप मान लीजिए हम प्रोसेसर हैं, आई एम अ प्रोसेसर ऑफ सोयाबीन्स। आज आई हैव सोल्ड 5000 tons of meal for November delivery. I need to buy 5000 tons of soybean and sell, let's say 1000 tons of oil against it to hedge my risk. But who will buy that? Who will sell it to me? A speculator who has an opposite view to you will sell to you. Because as a hedger, मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा मार्जिन को कैप्चर करना, मेरे रिस्क को एलिमिनेट करना। इफ एज अ हेजर, एज अ प्रोसेसर, मेरे को सोयाबीन बेच के बाय बाइंग soybean meal बेच के, by buying soybeans on exchange and selling soybean oil on exchange, I am able to capture 1000 rupees of crush parity. मेरा ऑब्जेक्टिव वो crush parity को कैप्चर करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट करना है। जबकि एक स्पेकुलेटर विल सी, oh, he's a seller of 5000 tons of soybean, he's selling it too cheap, or he wants to buy it too expensive. I think it's a good price. I expect crop will be big and prices will go down. So जब आप speculation करते हैं, you take a call on market. जबकि जब आप hedging करते हैं, you take a call on your strategy, कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है। These two are antagonistic or agnostic functions. So हमको जब भी एज अ कंपनी पॉलिसी हम हेजिंग के लिए जा रहे हैं, डोंट बी अ स्पेकुलेटर। और जब हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, डोंट थिंक कि यार आई एम हेजिंग इट अगेंस्ट माय प्लांट और अगेंस्ट दिस। प्लीज कीप दीज टू थिंग्स वेरी सेपरेट। इन दोनों का पर्पस एकदम डिफरेंट है, एंड दीज टू थिंग्स शुड नॉट बी मिक्स्ड। इफ यू विल मिक्स इट, that means you will have a wrong risk approach, and that will make sure that we lose money. So spot prices, we all know spot price is reflective कि आज के दिन में आपके शहर में commodity का प्राइस क्या है जिसको आप खरीद रहे हैं। That price is reflective of local S&D, freight dynamics, local supply and demand situation, local taxes. It is reflected everything in the spot price. While future price is an expectation, a commodity future buyer is looking a price in advance for upcoming delivery. That means it's an expectation what is going to be the future price tomorrow. Why I am giving idea on these two very simple things, because by this we are going to drive the basis. By this we are going to define what is basis. On future price, it is important to understand it as two. A future price ऐसा नहीं है कि हमेशा carry में होता है market. So carry markets are known as contango markets, in which the price of the future is higher than the price of the spot.
फॉर एग्जाम्पल आज कॉर्न का प्राइस 18 रुपीज है एंड अगस्त का प्राइस 20 रुपीज ऑन फ्यूचर. द मार्केट इज इन कैरी. That means the future price today is higher than the spot price. While, for example, the price of soybean November is 54,000 rupees and price today is 71,000. The market is in backwardation. That means the market is, future price of the market is lower than what it is today. And the market, either cash market will go down or future market will come up in case of backwardation, or in case of carry or contango, either the future market will come down or spot market will go up. So to meet, so that we have convergence of future and spot prices at the time of expiry. It is a very important concept. हमने एग्जैक्ट डिटेल ऑफ हेजिंग में जाने से पहले हमको ये समझना जरूरी है व्हाट इज अ हेज रेशियो. मान लीजिए हमने 5,000 टन ऑफ सोयाबीन मील एट $600 पर मेट्रिक टन पे बेचा. दैट मीन्स हमने $3 million की कमोडिटी बेच दी है. Now against that 3 million tons, $3 million equivalent of commodity, I have taken a hedge on INR, USD INR for $1 million, for $1 million. That means my hedge ratio is $1 million divided by my total exposure, that is $3 million. It is 1 by 3, that is 33%. When we completely hedge something, we have a hedge ratio of 100%. We only do 100% hedge ratio when there is a complete convergence in commodity, there is no basis risk, and we are doing hedging a commodity and there is no cross hedge involved. Second, there is a 0% hedge ratio when we are not hedged, when the commodity is completely open. मान लीजिए हमने $3 million का सोयाबीन मील बेच दिया है, but we have taken zero forex cover against that. Then we have a zero hedge ratio against it. Then hedging is defined into two ways, short hedge and long hedge. Short hedge is where the investor take a short position to hedge the future. वो कौन करेगा? एक producer will take a short hedge. जबकि आप processor हैं या consumer हैं, you will take a long hedge because आपको material खरीदना है future में. So you will try and hedge your risk, future price movement risk, by taking a long hedge on commodity. So this is the hedge. For consumer and processor, long hedge is important to witness. Then hedging is of two types, static and dynamic. That means हमने एक बार hedge करके छोड़ दिया, then and we don't care कि basis change हो रहा है नहीं हो रहा है, that is a static hedge. While in dynamic hedging we see it is more important case of option कि उसका डेल्टा गामा थीटा कैसे बदल रहा है और उसका impact on future मेरी net position पर कैसा आ रहा है. So these are the core concept before getting into hedging we should understand. So I have taken the same example कि हमारा forex exposure $1 million का है, हमने $1 lakh उसमें से hedge कर दिया. So our hedge ratio at the moment is only 10%. So if I have to define that, okay, I have 10, my position on forex for sale in November is 10% hedged. So this is important to define, to go to and understand cross hedge. This is a very interesting subject. Cross hedge, आज के दिन में आपके पास सोया ऑयल फ्यूचर है, सोयाबीन फ्यूचर है, बट इंडिया में सन ऑयल फ्यूचर नहीं है. हमारे पास चना फ्यूचर है, बट वी डोंट हैव लेट्स से तुअर दाल फ्यूचर. And we understand most of these commodities of the same segment which can be substituted can more or less have a same price movement. I'm just putting it as an assumption कि इनके prices के अंदर correlation रहता है. तो अगर उन commodities के बीच में correlation है और हम वो correlation को define कर सकते हैं, then हम अपने sun oil के risk को soya oil के risk के साथ cover कर सकते हैं. This is I'm going to cover in next slide. This is, I don't want to scare anyone with the numbers on the slide and the graph on the slide. I will explain it in very simple English terms. A minimum variance hedge ratio जो हमको क्रॉस हेज करते हुए समझना है कि मान लीजिए मेरे पास सन ऑयल की 1000 टन की पोजीशन है, अब मैं उसको सोयाबीन ऑयल से कैसे हेज करूं. एक तरीका है कि कोई आके बोले यार 1000 टन सन ऑयल है, आप 1000 टन सोया ऑयल बेच दो. दिस इज अ एब्सोल्यूट रॉन्ग वे ऑफ हेजिंग. ये हेजिंग का सही तरीका नहीं है.
आपको पहले यह समझना है कि सन ऑयल और सोया ऑयल के बीच में क्या रिलेशन है। सोया ऑयल के भाव के चेंज, सन और सोया ऑयल के भाव एक दूसरे से कैसे चेंज होते हैं, और मैं कितना सन ऑयल के अगेंस्ट सोया ऑयल हेज करूं कि मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाए। एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं अगर 1000 टन सन ऑयल के अगेंस्ट 1000 टन सोया ऑयल बेच देता हूं तो मैं एक नया रिस्क क्रिएट कर लेता हूं। एंड आई विल एक्सप्लेन, लेट्स से क्रॉस हेज अगेन। क्रॉस हेज, मान लीजिए मेरे पास सन ऑयल की 1000 टन की पोजीशन है और उसके अगेंस्ट सन ऑयल का इंडिया के अंदर कोई कमोडिटी फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपने सन ऑयल के प्राइस मेरे को लग रहा है आगे फ्यूचर में नीचे जाने वाले हैं और मेरे को वो हेज करना है, मेरे को प्राइसेस को हेज करना है। या फिर मैं प्रोसेसर हूं, मेरे पास 1000 टन मेरे पास माल है, वो बिक नहीं रहा है और मेरे को लगता है कि भाव मेरे को ये आज पोजीशन न्यूट्रल करना है, मेरी रिस्क पॉलिसी में आई कैन नॉट हैव 1000 टन की पोजीशन। देन टू मिनिमाइज योर रिस्क, आपको यह समझना है कि आप सोया ऑयल का फ्यूचर को बेच के अपने सन ऑयल के रिस्क को कैसे हेज कर सकते हैं। तो वो दो हम क्रॉस हेज उन कमोडिटीज में कर सकते हैं जो कमोडिटी का प्राइस एक दूसरे के साथ चलता हो, जिसमें दोनों के अंदर कोरिलेशन हो। एज वी अंडरस्टैंड, जो कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं लार्जली उनके बीच में कोरिलेशन होता है। सो वी एक्सपेक्ट कि सन ऑयल और सोया ऑयल के अंदर कोरिलेशन है, वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद कितना कोरिलेशन है, सन ऑयल के स्पॉट प्राइस कैसे चेंज होता है एंड सोया ऑयल का सन प्राइस कैसे चेंज होता है। हेजिंग, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, इसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमको डेटा एनालिसिस आना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि हम उस डेटा को एनालाइज करके जो नंबर बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हम एक एडिशनल रिस्क क्रिएट कर लेंगे। जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जितना पुराना डेटा अवेलेबल है, जितना बड़ा डेटा अवेलेबल है, हम उतने कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले सकते हैं, उतना अच्छा हम एक मॉडल बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पिछले 5 साल का सोयाबीन ऑयल का प्राइस अवेलेबल है रोज का फ्यूचर का, और सन ऑयल का प्राइस अवेलेबल है फ्यूचर का। मैं इनका प्राइस का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूं कि इनका प्राइस कैसे चेंज होता है डेली बेसिस पे। उसके बाद मैं इन दोनों का कोरिलेशन निकालता हूं। कोरिलेशन होता है कि हाउ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज चेंज विद ईच अदर। लुक इन ग्राफ 1। इन ग्राफ 1 सोया ऑयल, ये आपका प्राइस एक्स एक्सिस पे है और सन ऑयल का प्राइस वाई एक्सिस पे है। आपको स्ट्रेट लाइन ये दिखा रही है कि इन दोनों में कोरिलेशन है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइसेस ऑफ दीज टू कमोडिटीज। इसका मतलब यह है कि ये दो कमोडिटी का प्राइस एक दूसरे के साथ चलता है। एक दूसरे के साथ अगर कमोडिटी का प्राइस इंपैक्ट होता है तो मैं यानी क्रॉस हेज कर सकता हूं। लेकिन अब ये समझना है क्रॉस हेज कैसे करना है और कितना करना है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस प्राइस के अंदर, इन कमोडिटीज के अंदर कोरिलेशन कितना है। 82% का कोरिलेशन है मान लीजिए। सन ऑयल का प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, दैट इज 25 रुपया 85 पैसा। दैट मीन्स सन ऑयल का प्राइस एवरेज है 1495 और ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, वन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी मैं 66% कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि प्रत्येक दिन इसका प्राइस 25 रुपए से चेंज होता है। जबकि सोया ऑयल का एवरेज प्राइस 1231 रुपए है और मैं वन स्टैंडर्ड डिविएशन 67% कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि इसका प्राइस रोज 32% चेंज होता है। ये डेटा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये तो फ्यूचर डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम इन दोनों कमोडिटीज के कोरिलेशन को से multiply it with the price of sun oil and divide it with the price of the future contract, it will tell us कि हमारे को यानी 65%, अगर हम 1000 टन का हमको सोया ऑयल हेज करना है, सन ऑयल को हेज करना है, तो हमको केवल 65% पोजीशन लेनी है सोया ऑयल फ्यूचर में। यानी हमको 1000 टन अगर तेल हेज करना है सन ऑयल, तो मेरे को केवल 650 टन सोया ऑयल के फ्यूचर बेचने हैं। ये हेज रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं 1000 टन ऑयल के अगर अगेंस्ट है मैंने 1000 टन सन ऑयल सोया ऑयल के फ्यूचर बेच दिए,
तो मेरे पास 350 टन का एक्स्ट्रा रिस्क आ जाएगा। मेरी वो पोजीशन हेज नहीं होगी, मैंने 350 टन का एडिशनल रिस्क क्रिएट कर लिया। तो जब भी हम क्रॉस हेजिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि सभी चीजों के फ्यूचर अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास अगर अच्छा डेटा एनालिसिस है, डेटा है, हम अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छे मेथड से करते हैं, मैथमेटिकल वे से करते हैं, तो हम एक अच्छा फ्यूचर, अच्छे मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें यार 650 टन का रिस्क है इक्वल टू सन सोया ऑयल, एंड आई विल गो एंड सेल 5 टन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 130 लॉट्स ऑफ सोया ऑयल टू कवर माय रिस्क और hedge my risk of prices on 1,000 tons of sun oil. I hope everybody got the concept of this cross hedge, because it's a very important concept. Because आज के दिन में मेज के फ्यूचर लिक्विड नहीं है, मान लीजिए वीट के लिक्विड होते हैं, दुनिया भर में लोग कॉर्न को वीट के साथ हेज करते हैं, वीट को कॉर्न के साथ हेज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ क्रॉस सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजेज होता है। जब हमको लगता है कि वीट प्राइस कॉर्न प्राइस टू क्लोज आ गए हैं, क्योंकि कॉर्न शुड सेल एट अ डिस्काउंट टू वीट, तो हम वीट खरीदते हैं, कॉर्न बेचते हैं। जब हमको लगता है कि नहीं प्राइस बहुत डिफरेंट हो गया है, दैट मींस वीट कैन गो इनटू फीडिंग, देन वी सेल वीट बाय कॉर्न। So the point that I'm trying to say, cross hedge is a very important concept. Don't think कि मेरे पास 1,000 टन की एक कमोडिटी है, मैं उसके सामने दूसरी कमोडिटी बेच देता हूँ तो मेरा हेज हो गया है रिस्क। नो, you have taken additional risk in a different commodity. So cross hedge and understanding mean variance hedge is a very important concept. And once we understand this, we will never do mistake in hedging. We will never do mistake in taking future position और options position। हम अपना option के डेल्टा के अंदर कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि option का जो आपका exposure होता है वो डेल्टा से calculate होता है। And this is the crux of this presentation today. और इसको डिफाइन करने के लिए अब हमने इसको डिफाइन किया कि मान लीजिए हमारा 82% कोरिलेशन था, जो हमने पिछली स्लाइड में बताया सोयाबीन ऑयल और सन ऑयल के बीच में, और हमने 130 कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए। अब क्या होता है कि सन ऑयल का प्राइस 100 रुपया पर क्विंटल से गिर जाता है। हमारे पास 1,000 टन तेल था सन ऑयल, तो हमारे को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसके सामने हमने 130 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 650 टन्स ऑफ सोया ऑयल फ्यूचर बेचे थे। और हिस्टोरिकली जब भी सन ऑयल का भाव 100 रुपए से गिरता है, सोया ऑयल का भाव उसके सामने 150 रुपए से गिरता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे 650 टन के ऊपर हमको 9,67,251 रुपए रिकवर हो गए। तो जो हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था वो केवल घट के 30,000 रुपया रह गया। वो भी इसलिए है क्योंकि मैंने जो नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ किया है। अगर हम राउंडिंग ऑफ एरर हटा दें तो लार्जली अगर हमारे पास अच्छा डेटा अवेलेबल है, हमारे पास अच्छे स्पॉट प्राइजेस हैं, फेयर स्पॉट प्राइजेस और फ्यूचर प्राइजेस अवेलेबल हैं, तो हम लार्जली वेरी वेरी कोरिलेटेड हेज रेशियोज, क्रॉस हेज नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क मिनिमम हो जाता है, जिससे हमारे चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इवन इन अ प्रोडक्ट जो हेजेबल नहीं है उसका घट जाता है उसमें। यानी आज के दिन में अगर हम फॉर एग्जाम्पल उड़द को हेज करना चाहते हैं या तुअर को हेज करना चाहते हैं अगेंस्ट चना, अगर हमारे पास अच्छे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइसेस हैं, तो we can do it. We can define risk in these commodities and do a cross hedge. So this was the basic and this was the essence of this hedging across commodities, cross hedge, mean variance, how to define कि कितने लॉट से कितना रिस्क हेज होगा। अगर हम ज्यादा लॉट करेंगे तो हम नया रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, अपने रिस्क को हेज नहीं कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट को बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि लेमैन भाषा में, कलोकियल और आम भाषा में लोग ये सोचते हैं मेरे पास 1,000 टन एक चीज है, मैंने दूसरा बेच दिया, मेरा रिस्क हेज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि आप क्या हेज कर रहे हैं, उसका कोरिलेशन क्या है, उसका प्राइस रिलेशन उस कमोडिटी के साथ क्या है, और एक अच्छा नंबर डिफाइन करना, राइट नंबर डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज आपको पता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप प्रोसेसर हैं तो आपको लॉन्ग हेज करना है, आप प्रोड्यूसर हैं तो आप शॉर्ट हेज करते हैं।
अगर आपको फ्यूचर बेचना है तो उसे शॉर्ट हेज बोलते हैं। आपको अपने रिस्क हेज करने के लिए फ्यूचर अगर खरीदना है तो उसे लॉन्ग हेज बोलते हैं। इस चीज में हम आपको डिफाइन करना चाहेंगे कि बेसिस रिस्क इज अ मदर ऑफ ऑल रिस्क। अगर आप एक अच्छे हेजर हैं तो आपको किसी और रिस्क की चिंता नहीं है। आपको जो रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेसिस रिस्क है। आपको ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपको मार्केट में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। व्हेन आई एम सेइंग एंटर एंड एग्जिट, डोंट टेक इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेजिंग कि बट फ्रॉम मेरे को कब हेज को वाइंड करना है और अनवाइंड करना है, कब मेरे को उस हेज से बाहर निकलना है, कब फिजिकल कमोडिटी। It is largely defined by the how you define basis. Basis is actually cash price minus future price. मान लीजिए आज सोयाबीन का प्राइस फिजिकल में इंदौर के अंदर 74,000 रुपया पर क्विंटल पर मेट्रिक टन चल रहा है, जबकि आज सोयाबीन का फ्यूचर फॉर जुलाई इज ट्रेडिंग एट 71,000 रुपीज, 71,000 रुपया चल रहा है। तो आज बेसिस जो है वो 3,000 रुपीज पॉजिटिव बेसिस है, बिकॉज कैश प्राइस इज हायर देन फ्यूचर प्राइस। दैट मीन्स local cash values is higher than future value. That means as a processor you will have to pay more against the risk you have hedged. So जो strengthening of basis होती है, that means cash market moving faster than future market, वो एक प्रोसेसर के लिए खराब होती है। जबकि weakening of basis, that means cash market falling higher than the future market, एक प्रोसेसर के लिए अच्छी होती है। तो हम ये मानते हैं कि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल मार्केट के साथ कन्वर्ज करता है और बेसिस रिस्क एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिनिमाइज होते हुए जाता है। और हमको जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं तो पर्पस यही होता है कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर एंड स्पॉट। इट इज नॉट ऑलवेज देयर, लेकिन जो बेसिस रिस्क है हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए बेसिस रिस्क को समझना जरूरी है। लोग ये बोलते हैं कि हमने एक्सचेंज में हेज किया जी हमको नुकसान हो गया। नहीं, वो हेज आपने हेज किया, आप अपना बेसिस समझिए, आपने किस बेसिस पे हेज किया और आपने किस बेसिस पे अनवाइंड किया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बेसिस जो हम पोजीशन हेजिंग के लिए देख रहे हैं उसमें आप कृपया मुनाफा नुकसान ना देखिए। आप ये मत देखिए कि मैंने क्या भाव पे आपको वो डिसीजन अपने सेल और परचेज प्राइस के साथ जोड़ के देखना है। अपने कंसिस्टेंसी ऑफ 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 पोजीशन, कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सो हमारे को बेसिस रिस्क कब अराइज होता है, जब हम क्रॉस हेज करते हैं। हमने सन की जगह सोया को हेज, सन को हेज करने के लिए सोया बेचा, उड़ा दिया तुअर को हेज करने के लिए चना के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उससे हम एक बेसिस रिस्क क्रिएट करते हैं। जब हम एक डिफरेंट डेट्स के फ्यूचर को, मान लीजिए हमारे पास नवंबर का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है और हमारी सेल नवंबर की है, हमने उसको दिसंबर पे हेज किया। जब हम डिफरेंट मंथ्स पे हेज करते हैं, एक्सपिरेशन डेट पे हेज करते हैं, तो हम बेसिस रिस्क क्रिएट करते हैं। तो इट इज ऑलवेज better that we understand when we are creating this risk. We have tried to explain it by method of few small examples. मान लीजिए, and I have taken example of only long hedge क्योंकि we are processors and as processors for us it is important to understand long hedge. मान लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। आज जुलाई के अंदर कैश मार्केट जो है इज एट 55,000 रुपीज और फ्यूचर मार्केट इज एट 56,000 रुपीज। ओके, आज के दिन में बेसिस इज 1,000 रुपीज। आज I have sold soybean meal and I want to cover my November sales. What I can do? I can cover this in either physical or future. So what I have done, I bought future at 56,000 rupees. आज के दिन में if I want to go in physical market, I may get few beans, may not get at 55,000 rupees. So I have created a basis of 1,000 rupees. Now against that, जब मैं नवंबर में फिजिकल बीन्स खरीदने गया तो फ्यूचर 61,000 का है। मैंने अपना जो फ्यूचर खरीदा था वो बेच दिया और उसके सामने मेरे को सोयाबीन्स 60,000 रुपीज से मिल गए, जो मेरी कैलकुलेशन 60,000 रुपया था। मेरे को फ्यूचर पे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, फायदा हुआ, और मेरे को कैश मार्केट में
जो मैंने 55,000 के हिसाब से बेचा था वो मेरे को 60,000 में मिला। तो मेरा बेसिस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मेरे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का, जो मैंने अपना फ्यूचर से मेरे प्राइस को हेज किया, मेरा फिजिकल प्राइस इज हेज्ड एट 55,000 रुपीज। हालांकि मैंने फ्यूचर 56 में खरीद के 61 में बेचा, 61,000 रुपए में बेचा। जिस दिन मेरे को, जब मैंने कैश मार्केट 55,000 रुपीज का एक्सपेक्ट किया था, मैंने उस दिन 1,000 रुपीज फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे किया था फॉर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लोगों को लग रहा था तेजी है। और जब मैंने अपनी फ्यूचर पोजीशन को अनवाइंड किया, तब भी मेरा बेसिस 1,000 रुपीज। आई हैव लॉग्ड माय परचेज प्राइस for November delivery at 55,000 rupees. That means whatever gain I have made on future got offsetted by the loss I have made while covering my physical cargo. इसमें आपको ये मुनाफा नुकसान पॉइंट से देखना ही नहीं है। Why? इसीलिए मैंने एकदम अपोजिट एग्जांपल दिया है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि मान लीजिए इसी सिचुएशन में क्या होता, भाव गिर के 50,000 रुपया हो जाता, आपका अभी भी परचेज प्राइस लॉक्ड है 55,000 रुपया पे। आपने जो अपना सोयाबीन मील बेचा हुआ है, वो आपने ऑलरेडी अपना क्रश मार्जिन लॉक कर लिया है बाय बाइंग बीन्स एट 55,000। उसके बाद चाहे सोयाबीन का प्राइस 60,000 रुपीज हो जाए या सोयाबीन का प्राइस 50,000 रुपीज हो जाए, आपका क्रश मार्जिन लॉक्ड है। आपको अपना जो आपका कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, उसका आपने रिस्क एलिमिनेट कर दिया है। इसीलिए दिस वी हैव टू स्पेशली अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पोल्ट्री कंज्यूमर, कि आज फॉर एग्जांपल आई नीड टू बाय सोयाबीन्स कॉर्न फॉर फ्यूचर, हाउ आई कैन फिक्स माय फ्यूचर प्राइसेस, हाउ आई कैन कंसिस्टेंटली फिक्स माय प्राइसेस। आज मैं पार्ले एज अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को हाउ आई नीड, मेरा एमआरपी फिक्स्ड है, हाउ आई protect my margin by hedging my future cost of wheat, oil, and sugar in the coming months, so that there is a consistency in my buying pattern, so that my budget does not go haywire, so that when my investors are asking me return कि आपने जी वॉल्यूम तो आपने डबल कर दिया लेकिन आपने इस साल पैसा गंवा दिया, वो बोलेंगे वो जी शुगर का भाव बढ़ गया था या wheat का prices have gone up, that's why I have lost money. But a, a company whose business is to sell biscuit has no business to take risk on wheat, oil, and sugar. They have to eliminate that risk within their budget. So for that, they take hedges so that there is a consistency in the returns they are generating. There is a consistency in their purchase price. There is a consistency in their margin. I'm re-emphasizing this point over and again कि हम किसी भी पॉइंट पे हेजिंग को प्रॉफिट और लॉस से एसोसिएट ना करें। हम हेजिंग को हमेशा एक कॉस्ट ऑफ परचेज से एसोसिएट करें, हम उसको कंसिस्टेंसी से एसोसिएट करें, हम उसको बेसिस रिस्क से एसोसिएट करें। नाउ आई हैव टेकन बेसिस रिस्क एंड इंपैक्ट ऑन लॉन्ग हेज। मान लीजिए आपने सोयाबीन फ्यूचर खरीदा था 56,000 रुपीज पे और फ्यूचर बढ़ के 63,000 हो गया, जबकि फिजिकल मार्केट हैज ओनली गॉन अप टू 61,000 रुपीज। इस समय what has happened, you basis has weakened, that means cash market has weakened against the future prices, that means आपका basis risk has gone in your favor, that means आपका procurement price जो 55,000 था वो 54,000 हो गया। but this is a risk, again it can go against you in next example। अगर आप देखिए आपने फ्यूचर 56 पे लिया और आपका फ्यूचर हैज ओनली रैलीड टू 60,500, जबकि आपका स्पॉट मार्केट हैज गॉन अप फ्रॉम 55,000 रुपीज टू 61,000 रुपीज। अभी आपकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो एडिशनल हो गई है बाय $1,000, क्योंकि आपका जो बेसिस रिस्क है वो बढ़ गया है, बिकॉज बेसिस हैज नॉट डन द जॉब दैट यू वर एक्सपेक्टिंग इट टू डू। दैट मीन्स हमारा जो रिस्क है इन दिस मार्केट इज ओनली द बेसिस रिस्क। हमने अपना प्राइस रिस्क को कवर कर लिया है और उस बेसिस रिस्क को कवर करने के लिए हम वेरियस चीज कर सकते हैं। पहली बात, हमारे पास अच्छा डेटा होना चाहिए स्पॉट मार्केट का। हमको ये समझना चाहिए कि कब बेसिस ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। बेसिस यूजुअली इज मीन रिवर्टिंग, दैट मीन्स जब भी ऊपर जाएगा उसके बाद फ्यूचर प्राइसेस ऊपर जाएंगे एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड बेसिस यूजुअली गो डाउन
during the expiry, when intra-commodity spread, during the seasonality हमको understand करना है कि कब future prices और physical prices में divergence सबसे ज्यादा होता है. हमको relative value trade करने हैं कि हमको ये सोचना है कि एक महीने का हम अगर नवंबर का फ्यूचर हमारे लिए अच्छा है या दिसंबर का फ्यूचर हमारे लिए हिस्टोरिकली उनके बेसिस कैसे एक्ट किए हैं. सो when we are doing hedging, it is very important. हमारे लिए ये important है कि हम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्ड करें बेसिस के प्रति. अगर हमारी बेसिस की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो हम एक अच्छा हेज कर पाएंगे. और अगर हमारे को क्रॉस हेजिंग समझ में आता है तो, और वंस वी हैव अ गुड डेटा ऑन स्पॉट मार्केट्स, फ्यूचर मार्केट, क्रॉस हेज, देन हमारे को ये डर नहीं रहता है कि ये कमोडिटी हेज हो सकती है, नहीं हो सकती है. हमको अपने रिस्क को एलिमिनेट करना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, हमारे रिस्क को किसी और को देना है जो रिस्क लेने को तैयार है. हमारा पर्पस कमोडिटी रिस्क लेना नहीं है, हमारा पर्पस कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है. दैट इज द एंटायर thought process behind the discussion of this part. Being a processor, it is important for us to understand board crush. What happens in soybean industry, crush refers to physical process of value creation. कि हमने सोयाबीन खरीदा, हमने मील बेच दिया, ऑयल बेच दिया, जो हमारा मार्जिन लॉक हुआ, दैट इज ग्रॉस प्रोसेसिंग मार्जिन. ये आप दो तरह से कर सकते हैं, फिजिकल मार्केट पे भी कर सकते हैं और बोर्ड पर भी कर सकते हैं. जब हम बोर्ड के ऊपर इसको करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आज इंडिया से एक्सपोर्ट ऑफ मील की अच्छी डिमांड आ रही है इन नवंबर. अगर हम सोयाबीन मील बेचते हैं, हमको पता है कि 82% इज मील और 18% is oil. If we sell 18% of oil against that and we buy 1000 tons or 100 tons of soybeans against that, then we are entering into a board crush spread, जिसके अंदर हम अपने क्रश मार्जिन को लॉक करते हैं. इसको भी लोग ट्रेड करते हैं. जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोयाबीन के प्राइसेस विल राइज फास्टर देन द आउट प्राइसेस, वी गो इन अ लॉन्ग क्रश स्प्रेड. जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि the price of oil and meal will rise faster than the soybean, then we go into short crush spread. We sell beans and we buy the end product. So the entire Sumit ji, yes, yes. Sorry, I am interrupting you. This is Yeah. Kapil from NCDEX. Hi. Yes. I just wanted to understand, Sumit ji, because basis you have just covered, right? It's important to understand that basis risk is most of the time very minimal in comparison to flat price risk. Right? Yes. So, because when we talk basis, it looks like that already we have 10 risk and one is more added, which is basis risk. Yes. But even in the example, what Sumit has mentioned that prices from 56 to 61 has moved, your basis may move maybe around from 200 usual basis to 250. So against a flat price movement of 500 rupees, basis has moved only 50 rupees. Yes. So that's why basis trading is much, much safer than flat price trading. That's what Sumit has mentioned. And point number two, the basis, historical analysis of basis, what Sumit has mentioned. If we have that fair idea, and we know that my center where I do buy or where I do keep my inventory, how basis has moved over a period of time, I think that gives you a very, very bright opportunity to design your inventory management and your purchase. So just for an example, if you see that my basis most of the time remain negative at this point of time, suppose in the month of July, my spot is less than 100 rupees from future historically, but because of certain reason now it's trading 100 rupees over, means basis is positive against what I have understood in last 5, 6, 10 years. It's indicating you something that what you should do with your physical whole inventory and what you should do with your purchase planning. Maybe you can just sell your physical inventory because you are getting premium against historical discount which this center carries against the futures. So that also is an important part to understand. And basis is very important. That's why if you see in the global market, the all trade is all basis. So
The price you see, what is Argentina price? Minus 75, minus 20 cent, minus 5 cent, minus 10 cent. Nobody talks about flat price. Even in Indian market, we have seen where we have matured futures contract that prices are NCDX over and above, means over or discount. NCDX minus 40, NCDX plus 40, and every day it keeps on changing. So it's basically informal basis which people have understood, but they are doing physical trade basis futures market. So this is very important. Sorry, Sumitji, I'm interrupting you, but I just wanted to add on it. Kapilji, it was very important, and maybe I will dwell on what you have mentioned. Exchange has provided you all the information. अगर आप exchange की website पे जाओ, you will get the future data, you will get the spot data of various centers. आपके पास अपने location का खुद का price होता है. So you can define the basis risk yourself, okay? And second, basis is the minimum risk you have to take. It is the, again I'm mentioning, it is the minimum risk that you need to take to hedge your prices, right, Kapilji? It is the minimum risk. Again, I am re-emphasizing. उसके बिना आप hedge नहीं कर सकते. So it is important to understand if we are understanding. It is to have a view on that minimum risk, so that you don't feel at any point in time that it has not worked well for me. So the entire premise of explaining this thing was that we should have a reason, we should have a knowledge that if something does not work 100% as we wanted it to work, okay, what can be the one potential reason? But basis is the minimum risk that you need to take to palm off your risk, to lower your risk, and to make your prices more predictable, make your supplies more predictable, take a price risk management strategy. And this is where we come more towards the discipline part, which is potentially the last part of the presentation. We are saying a hedging strategy should be process oriented. It should not be result oriented. ऐसा नहीं होना चाहिए कि if we have made money, we say, oh, it was good, I have made a good trade, or I have made a bad trade. No, you have to define by rules, by method, that okay, I have sold my meal today basis the exchange futures for November, which is trading at 5,500, and I have locked in my crush margin basis that. And so once you get into a process-oriented risk management, your chances of going wrong substantially reduces. The companies who have a better risk understanding and risk management have much higher longevity. They do better than their competitors. They are more consistent. They have a higher valuation. They get more premium from the stock market because people know, or the investor know, that this company is a good company to invest in. They get a lower rate of interest on their working capital. They get higher sale price on their product because people know he understands his risk, he will not default. Plus, once you start looking at a commodity sale price from margin and spread point of view, hedging point of view, then the risk button get triggered in your mind. Okay? And it is very important because then you get an idea, and then you are at a right spot to take decisions. Without having a proper method in front of you, a proper method of doing things, will end up making mistakes, and we will again remember Goddess Fortuna or Lady Luck or Taiki every time that things go right or wrong for you. The idea is to make ourselves lucky in every situation, to make our luck meet our success, because the success only meets a prepared mind, and we have to prepare ourselves by right knowledge. And that is where the knowledge of hedging, processing, hedging basis, futures, derivatives is very important. And that is where I believe the exchange and every part of the world, they do these knowledge seminars, webinars, because they want their investors to do well. They want their processors, their hedgers to come on the platform and understand what they're doing. Sumit, just one small thing. Yeah. Sumit, just one small thing. Yes. Yes. If you can switch off your video, sometimes your voice is breaking a lot. Switch off your video. I think the voice quality will be better. Okay, one second. Is it okay now? Is it better? Yes, Sumit, better. So, and that is the main purpose of
knowledge series. That's the main purpose, that we have to make ourselves prepared for the eventualities. The commodity risk will only amplify. I will take maybe next 3 to 5 minutes to explain the macro risk that is coming our way. Because today there is a book, if people want to read, If It Rains in Brazil, Sell Coffee in US. Because what happens if there is a very good, there are two main weather patterns, La Nina and El Nino. In La Nina, South America, it does not rain well, it rains well in India. In El Nino, it doesn't rain well in India, it rains well in South America, in US. So what happens in those kind of weather patterns, what happens, the crop production in US and South America goes up, but the price for the product in India goes down because global supplies goes up. So Indian farmer becomes a risk recipient without his fault. So even if his crop is less in India, okay, but global prices does not support him to sell at higher prices. So Indian S&D becomes a domestic S&D. In the years, for example, we had a La Nina year. Indian production was relatively good. Everybody was saying soybean had a good production. Chana, wheat was good production, but prices rallied because Brazil, Argentina, and US production was relatively less because of El Nino. And we have to understand this macro risk. We have to understand these macro flows so that we can understand our risk. We can make our strategy around those risks. We can analyze those risks. And in next 3 months point of view, what we are witnessing this year, carry out of most of the crop is very tight when we are getting into US planting season. And that is where the US weather pattern needs to be watched every day. You need to watch whether it's raining in US or not, whether the optimum rain is happening at the right places or not, because it will give you direction, idea on or the probability of market going up or low. Because if this year production goes down globally, that means global prices can become very volatile. But if production comes back, even if Indian production is less, we might not see huge price rallies. So the world is a connected world, and we have to see it from that point of view. Never be emotional while trading futures. Never think the market goes against me, people are against me, or my luck is bad, things go against me, or I'm too lucky. No, always put a method behind madness, always put a reason, always understand that reason. Make your calculations mathematical. Understand, look, you don't have to do it in Excel. It can be intuitive. Once you start doing it, you start understanding the method. आप वो अपने आप दिमाग में मुजबानी कर सकते हैं. You don't need to have pen and paper and Excel sheet to do it. What is more important is to have an intuitive, एक उसके प्रति हमारी understanding जरूरी है. And that was the main purpose of this presentation. And that is where what we have to understand, that we don't have to chase the market. We don't have to become a victim of the market. We have to look at a market in a very dispassionate way. We have to look at the market as a game of skill, not as a game of luck. We have to look at market, how we can increase our skills every day to play this market better, to participate in this market better, to take better outcomes out of this market. And maybe I have taken maybe 90 minutes of your precious time to explain these concepts. I hope I've been able to explain it thoroughly. And after this presentation, Kavita ji, you feel free to share it with participants. I will send you Excel sheets where people can use it for basis and cross hedge analysis. वो अपने numbers डाल के उसमें कर सकते हैं. I'll put all the formulas and all so that it is easy for the participants. And thank you very much for taking time out from your busy schedules. Thank you. Thank you. Thank you, Sumit. I think it was a very exhaustive and extremely, extremely detailed presentation. I'm sorry, participants. मैं शुरुआत में नहीं join कर पाई, कुछ technical issue था. Sumit, I'm not sure if you were introduced by Kalpesh in full totality, but मैं participants को ये बताना चाहूँगी that Sumit is ये हार्वर्ड के alumni हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन का कोर्स खत्म किया है विद इफ्टा
and he is also comes with 17 years of experience. And I think कुछ इनका जो pedigree है वो हम लोग को presentation में definitely दिखाई दिया है. However, Sumit, for the benefit of the participants, I'll request you if we can go back to one of your slides where you're talking about sunflower oil and soybean. Yes. Yes. Now, last time we had a question from one of the participants where there was a participant in the audience who said that I am a mustard oil trader. How can I hedge mustard seed? And can I hedge my oil exposure through seed? So I think on similar lines, though these are substitute products, one is an input, one is a processed value add product. On the similar lines, if you can reiterate and explain this sheet again slowly so that participants can follow. I'm yet to receive questions. Kalpesh bhai, in case you've received questions post Sumit finishes, please start, asking. We can ask participants to start putting their questions in the chat box. So I will answer your question on the rapeseed oil from in two ways. Okay. Number one, let's consider rapeseed oil as oil. Okay. And in last presentation presented by Nidhi, I think she has presented a slide on which she has shown the correlation of various oils. Okay. Now let's say we have an active soybean oil future in India. Just to give you an example, and when we are going for a hedge, if we have an active soya oil future, it becomes a choice for us whether we want to hedge our rapeseed oil exposure through rapeseed or we want to hedge it through soya oil future. I'll explain both. I'll start with hedging it through soya oil future. Okay, you have the future prices for soya oil. You should have the spot prices for mustard seed, RM oil with you. Then define the standard deviation in prices for these two commodities. Okay. And define the correlation between price of these two commodities. कि sun oil, soybean oil का future का change और rapeseed oil के physical price के change में क्या correlation है, which you can define with a very simple Excel formula, CORREL bracket close, जिसमें एक में सोया ऑयल के प्राइसेस डाल दीजिए, दूसरे में रेपसीड ऑयल के प्राइसेस डाल दीजिए, उसमें आपको कोरिलेशन आ जाएगा. मान लीजिए दैट कोरिलेशन इज 60%. एनी कोरिलेशन ओवर 50%, 55% इज अ गुड कोरिलेशन. ओके, मान लीजिए आपका कोरिलेशन आ जाता है और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मीन के ऊपर क्या डिफरेंस है. आपका मीन भाव सोयाबीन ऑयल का 1230 रुपया है और इसके हिसाब से आप ये बोल सकते हैं 67% कॉन्फिडेंस है कि हर रोज सोयाबीन ऑयल का प्राइस 30 रुपीज चेंज होता है. और मैं सन ऑयल की जगह इसको रेपसीड ऑयल मान लेता हूं, इसका भाव 25 रुपए से बदलता है और इसका एवरेज 1500 रुपया भाव है. Now it defines the standard deviation. Once we have a standard deviation, we make the commodity agnostic. उसके बाद हमको ये मतलब नहीं है कि commodity क्या है. अगर आपका डेटा सही है, then what will happen? हम correlation factor को spot price से multiply, standard deviation से multiply करके सोया ऑयल के भाव से उसे डिवाइड कर दें तो हमको हेज रेशो पता लग जाएगा. मान लीजिए हेज रेशो 65 आता है, तो वो ये डिफाइन करता है कि मेरे को 100 टन मस्टर्ड को हेज करने के लिए केवल 100 टन का कॉन्ट्रैक्ट 65 टन ऑफ सोया ऑयल हेज करने की जरूरत है. या मान लीजिए ये मीन वेरिएंस रेशियो 130 आता है, तो उससे ये होगा 1.3 आता है कि मेरे को सोया ऑयल मस्टर्ड ऑयल 100 टन हेज करने के लिए 130 टन ऑफ सोया ऑयल हेज करना पड़ेगा. उसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी हेज करनी है यू कैन डिफाइन, एंड यू कैन डिफाइन कि आपका कितना रिस्क सोया ऑयल में आपको मिटिगेट करना है. मान लीजिए मीन वेरिएंस 65% है, तो मेरे को 1000 टन का रेपसीड ऑयल का रिस्क हेज करने के लिए केवल 650 टन ऑफ सोया ऑयल बेचना है. मेरे को 1000 टन नहीं बेचना है, मेरे को 650 टन बेचना है, बिकॉज दैट कवर्स माय रिस्क ऑफ 1000 टन ऑफ रेपसीड ऑयल. This is one example. Okay. Now I don't want to do this. मेरे को speculate
लग रहा है, I want to do it by board crush. मान लीजिए मेरे पास 1000 टन नवंबर मेरे को I have 1000 tons of rapeseed oil, okay, or I want to, let's say, I have a long position on 1000 tons of rapeseed oil. The rapeseed factor of oil is 40% from rapeseeds. Rapeseed का भी active future है. Then that means if I have, for example, 2005, if I go short 2500 tons of rapeseed against that, okay, and I buy in front of that rapeseed meal, then my crush spread is protected. मेरा रिस्क मैं rapeseed के थ्रू भी hedge कर सकता हूँ. और अगर आप रेपसीड के फ्यूचर के, सोया ऑयल के फ्यूचर के अगेंस्ट रेपसीड के फ्यूचर्स लगा दीजिए तो आपका कोरिलेशन निकल आएगा. आप केवल रेपसीड के फ्यूचर के कोरिलेशन को समझ के एक क्रॉस हेज रेशियो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को अपने ऑयल के रिस्क को हेज करना है तो मेरे को रेपसीड का कितना फ्यूचर बेचना है. सो वी कैन हेज एनी कमोडिटी with any other future as long as उन दोनों के प्राइस के अंदर रिलेशन है. वो दोनों एक दूसरे के प्राइस के साथ या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. Any kind of relation between any two future contract, one spot and one future contract, can help us to take a cross hedge. I hope I have answered your question. Hello. So, Sumit ji, we have various questions in the chat box. If you could see, otherwise I can explain here. Kalpesh bhai, I have one question here, which I can see in the chat box as well. Just give me a minute. So there is one question which has come up, that what is a good time to consider while calculating the correlation for hedge ratio? Is there a good time to do that? Look, it is a backward looking measure. इसके अंदर आप historical data लेते हैं, ठीक है? तो historical data जितना आपके पास old data available है, आपके relationship उतना अच्छा आएगा. Okay? So there is no time because it's not a forward looking measure कि आज मैं अगर इसको What is a good time period? What he's asking is that 2 years, 3 years, yeah. Look, I'll put this way. Any for statistical measure, you need to have minimum 30 entries. Okay. अगर आप daily price पे call लेना चाहते हैं, तो आपके पास 30 days of prices, daily prices is good. अगर आप monthly view लेना चाहते हैं, तो 30 months data, monthly price is good. Okay. अगर आप yearly call लेना चाहते हैं, then 10 years data is good. Okay. So for any statistical measure, you need 30 entries to convert it from population sample size to population. So any 30-day period can give you a good reference point. Okay. But again, I'm not saying ये minimum है. आप इसको कितना भी पीछे ले जा सकते हैं. It will only increase the efficacy, the efficiency of your hedge ratio. Okay. But अगर आप मेरे से minimum पूछ रहे हैं, I'm answering that question. Sure, Sumit. Thank you. Kalpesh bhai, I can't see more questions. आप अपने end पे, I'm sure because you're the host, you'll be able to view more questions. आप अपने end पे please पूछिए. So some of the questions have posted here to presenter as well as the host. One question from Mr. S.N. Mishra, that being a poultry industry, for birds price are not fixed, and how can hedging? Will you please help us? It's a very interesting question. Okay, I will take both the question. There was a question: can we do cross hedging of soybean and soybean oil? Look, soybeans has an active future contract, so you don't need to cross hedge. Generally, you cross hedge in the commodities जिसमें आपके पास future tool available नहीं होता. So soybean has a good future contract, so you don't need to cross hedge. Potentially, you can hedge directly on soybeans. Second part of the question is very good question. Poultry industry bird prices are not fixed, how can we hedge? Look, if your input price is not fixed and output price is not fixed, okay, then your business is a very risky business. Okay,
So at some point in time, basis your experience, data, information, you will like to hedge one, or you will like to smoothen one part of the chain. You will say, okay, I need to have some predictability on my input prices, क्योंकि आपके पास भी कस्टमर आते होंगे जो बोलते होंगे कि यार I want egg prices for next 6 months, or I want broiler prices for next 6 months. So if you are able to define raw material prices through hedging mechanism for next 6 months, which is around 85% of your cost, you will be, with a larger degree of confidence, you will be able to define your forward prices. ये chicken and egg story है, which is a poultry industry in itself. बट चिकन एंड एग स्टोरी क्या है, आज इंडस्ट्री फॉरवर्ड सेल्स इसलिए नहीं करती, वो बोलते हैं कि हमारे कमोडिटी वॉलेटाइल है, दैट्स वेयर वी आर नॉट गोइंग टू डू commodity sales, our end product sales in to institutions for more than 1 month or 2 month. और दूसरे एंड पे वो इसलिए दे शाई अवे फ्रॉम हेजिंग कि हमारा एंड प्रोडक्ट का प्राइस वॉलेटाइल है, सो वी डोंट वांट रॉ मटेरियल प्राइसेस टू बी फिक्स्ड. आई बिलीव any industry for growth needs predictability. अगर इतना variability होगा तो what happens, industry growth gets stymied. And at some point in time, okay, maybe if for with institution like Britannia and all, for the companies who want to buy long-term contracts, okay, if we can take a view on raw material through hedging mechanism, we will be able to give a view on the output price. But agar dono volatile hai, I'll put this way, it is bad for the industry. There is no right answer for it. It will depend from company to company whether you want to hedge in this case or not. But I always believe you need to smoothen out one risk, either the output price risk or input price risk, so that you can take at least a call. For example, I'm just giving you example, which is an extension. If you know what is your input price, then you can get into branding, because in brands relative prices are fixed. Then you can brand your egg and say, okay, I want to sell egg 5 rupees per egg, I can sell for next 1 year, because in a brand, price does not change every day. So the point I'm trying to make is there is no right answer for this question. It depends on your company policy, number one. And number two, you need to make your industry returns predictable, and it has to start somewhere, either at the raw material level or at a fixed price level. Yeah. Kalpesh ji, Yeah, Sumit ji, questions further? the repeat question from the same participants. No price egg or bird fixed for the 6 months. Yes, that's what I'm saying. I know, I mean, it is appreciable that this industry does not have a fixed price on the end product. But I'm saying, the point I'm trying to make, that we need, what happens because of this industry growth slows down. At some point in time, we need to fix up one end. So if we can, we don't need to hedge our raw material 100% prices. We may start with 30%. We see the efficiency. We then increase it to 50% if it increase our performance better. So we can define a hedge ratio against. You don't need to be 100% hedge, but you need some degree of hedging to bring predictability in your business. That's the only point I'm making. Yeah. Okay, some of the participants have asked for the PPT also. Can we give? I just want I will send it to Kavita ji. You can share it with the participants. Yeah, some of them have asked for the calculation ratio, standard deviation, if possible. Okay, I will send that Excel sheet also. Okay, and I will send few more Excel sheet for the people who have interest in data analysis. Okay, I will send those things. Okay. Kalpesh bhai, any more questions? And no more question as of now. And I think we should have starting sum up. Meanwhile, if there is some question is coming, yes, one question again. We are using soybean, so can we do the cross hedging with the soybean and oil? I think we have discussed it, right?
Yeah. So That- yes, so basically what Sumit said, I'd like to answer that question, Sumit, on your behalf because you've already repeated it. कि अगर आप सोयाबीन अगर आप आपका एक्सपोजर सोयाबीन पे है एंड आपको ऑयल भी हेज करना है तो दोनों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. आपको एक के साथ दूसरा हेज करने की जरूरत नहीं है, बट आप अपना क्रश मार्जिन डेफिनेटली लॉक कर सकते हैं using both the contracts. Sumit, if you want to correct me, you can. Yes, absolutely. No, I'm 100% on the same page कि हमको क्रॉस हेज उस कमोडिटी में करना है जिसमें फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, जिसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट का टूल नहीं है. तो इट क्रॉस हेज इज नॉट द प्राइमरी आइडिया. क्रॉस हेज इज अ सेकेंडरी आइडिया, इज अ कंपल्शन व्हेन a future contract either is not liquid or available for the commodity जिसमें हमारा रिस्क है. Okay. Yes, thanks Sumit. अगर और कोई questions नहीं है तो we will move to our Achha, one earlier, sorry Kavita, one earlier question was there from Mr. Kanodia. Is it correct to say in forward we enter into the one contract only on the exchange, in futures we have to enter to two contracts on in each cash market, i.e. spot market and another in a future market? How these futures and forward differs? How these two are correlated with the actual purchase of the goods openly from the market or take delivery from the exchange, and how it translates into the profit or loss? So I'll answer the question. I know it's too long question. If you have missed something, should I put into the chat box again to everyone? Question up. Now, there are 2 or 3 things. One, that first question is that how is futures different from forwards? So futures, sir, are conducted on recognized exchange platforms, which are regulated by SEBI. Forward is a bilateral agreement between two parties, a buyer and a seller, to agreeing on a fixed price to deliver either the processed product or deliver the raw material or the input cost. So that's how a forward works. Difference between futures and forwards is that forward is a bilateral communication. There is a possibility of a counterparty default. Whereas on a futures platform, there is the exchange works on the principle that counterparty risk is completely mitigated and taken care of, right? That is one. Second, आपका question था कि आपको futures पे 2 contract लेने पड़ते हैं और forward में 1 contract लेना पड़ता है. That's not true, because जब आप forward contract करते हैं, एज एन लिटरली अगर आप सोचें, जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप एक प्राइस पे आप फिक्स करते हैं. अगर आप प्रोसेस्ड कमोडिटी अगर आप आगे बेचना चाहते हैं, सपोज आप बेसन मैन्युफैक्चरर हैं और आप चना खरीद और आपको चना प्रोसेस करके बेचना है, तो आप डेफिनेटली फिजिकल में पहले आप चना भी खरीदिएगा और फिर आगे जाके आप अपना प्रोसेस्ड कमोडिटी का प्राइस आप फिक्स कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. जब आप फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो फ्यूचर्स पे आप इनफैक्ट एक ट्रांजैक्शन आप इधर फॉरवर्ड्स में कर रहे हैं या स्पॉट में कर रहे हैं, एंड वन ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग ऑन द फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म. जो ट्रांजैक्शन आप फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पर करेंगे, दैट इज दैट ट्रांजैक्शन जहां जो आपका रिस्क है. Say suppose your risk is that your raw materials price will go up when you have to finally deliver the processed product. आपको चना खरीद के बेसन बना के जब आपको देना होगा, तब आपका जो इनपुट कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा. दैट मीन्स आपका चना का प्राइस बढ़ जाएगा. तो ये आपका रिस्क है. तो जो आपका रिस्क है वो आप एक्सचेंज पे डाल देते हैं या फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, विच मीन्स दैट यू कम ऑन टू द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड यू बाय चना. Okay, so this is one. Kalpesh bhai, if on in terms of delivery, sir, exchange platforms पे जो delivery होता है, definitely you can use the exchange platform for delivery purposes also, for delivery procurement purposes also, or to offload in case you are a stockist, to offload your commodity onto the exchange platform and deliver on the exchange platform. You can definitely use it, but exchange platform
पे डिलीवरी इंसिडेंटल है. हमारा कोर पर्पस to exist is not to be a procurement avenue, but a risk management platform. What you mentioned Yeah. is very important. Sorry. You please carry on, sir. Okay. What Kavita mentioned is very important. Key word is platform. Okay. Future market exchange is a platform. Okay. It is a futures जहां पर buyer और seller आते हैं through a medium of what you call a clearing house. Okay. जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपका seller कौन है. आपका सारा risk exchange assume कर रही है. आपको ये मतलब नहीं है कि पीछे बेचने वाला कौन है या खरीदने वाला कौन है. जबकि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एवरी रिस्क इज assumed by you, okay, as a buyer or seller. And Kavita ji has mentioned what is equally important कि exchange is a price risk management platform. It is not a procurement platform. जबकि फिजिकल में आप अपना रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रिक्योरमेंट पूरा करते हैं, जबकि फ्यूचर्स के थ्रू और फ्यूचर मार्केट के थ्रू आपका जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है. Is that okay, Kavita ji? Thank you. Yes, Sumit. Kalpesh bhai, any more questions that are left? Yes, Ms. Preeti Gupta has a question. Can you give some insights on the price discovery? Okay, the question Sorry, is. I missed you in between. The question is, can you give some insights on price discovery? Okay, this is from Ms. Preeti Gupta. What is price discovery? Or before that, let's define what is price. Okay, we are not saying price invention because the words in itself define the purpose. What is price? Price is a number at which both buyer and seller converge. Their expectation of a value of a deal converge at a number, and that number is price. And why it is discovery? Because it takes time to define it. Okay, it takes multiple iteration. Auction is the best method, best price discovery, and exchange is the auction method where buyers and sellers continuously auction their price expectation, okay, through exchange platform. So you discover a price, you never invent a price, because invented price is figment of imagination, while discovered price is, that means there is a process of discovering or finding a right benchmark on which the expectation of buyer and seller, supply and demand, global macros and local S&Ds match. So we can define price in any way, but it is a value which you put on a commodity. It is your expectation, or it is a number in which your expectation materializes into value for a commodity. So exchange is the best platform because it's a continuous auction. Both buyer and seller come on the platform and they readily exchange their views and their expectation. So exchange platform helps in the price discovery. Mandis, in physical market. Kavita, there is a question which has no relevance with our training program, but yes, it has relevance with the exchange platform. So should we discuss here the question? Please. Yeah, the question from Sanjay Goel. What kind of support NCDX provide to retail traders? I mean, I'm not able to get the future data monthly contracts for the setting of my strategy on RM-seed and refined soya. Sir, you get on the exchange platform, there is data available for a month. Now, this is a policy with all the exchanges that this data is only available for a month. If you want to establish your strategy around definitely data, which Sumit put a lot of emphasis on, and even I validate what he's saying. We have a data purchase policy. We can share that with you, and definitely, we'll be able to help you with that. Sir, Ms. Preeti Gupta is still having some confusion regarding to the price discovery definition you have given. Is there any chance to give more clarification on that?
So Sumit, you explained price discovery as not an invention, but of course, price discovery is one of the core functions, Preeti, that the exchange undertakes. So it is a process by which there is complete ambiguity that who is the buyer as a buyer, who is the buyer, who is the seller, and all of them through their activities on the exchange platform are invariably sending price signals to the market. Plus, the futures market is aligning itself with the spot market, because the spot market is the I would say the futures market by the end of the contract completely mirror the spot market as well. So when you're talking about the price discovery, that's how price discovery happens. When I do not know who's on the other side of the table, I do not know the amount of trades that the other person would be putting, right? I do not know the quantity of trade that the other person will be putting in, right? And that's how the real price discovery happens on the exchange platform. And the and we when we say price discovery, so sitting today, you are able to look at prices of contracts 3 months ahead, 4 months ahead, 6 months ahead, to get a price view as to what the price of soybean or refined soya oil would be, because at least from say the near month, the next month, and the next 3 months contracts on all the commodity exchanges are absolutely liquid, well participated. And hedgers like you, when they come onto our platform, when they come with full participation onto our platform, is when you see the real price discovery in the even further far month contracts. Sumit, if you want to add something, please do. Yes, so let me interrupt. We are getting success to put our thoughts to Preeti, and she is convinced now and she is understood. One more question here. It is something like hedge ratio specifically for Bursa Malaysia and Indian crude palm oil market. Can we have any specific example available here? I have not analyzed data for that. What I will do, I will use the data. So Mr. Chakresh Jain has raised this question. We can reply him privately by mail if we are okay with. Sure, I will take this. I will put the data in the Excel sheet and send it across to you guys. Okay, you can share. I think Kavita, we are getting very good response from the students, and I believe that the interaction, they have participates and they have got extreme knowledge about hedging. I personally believe, because the good question we have in our chat box. Do you have any comments? Should we sum up now? What should we do? Yes, Kalpesh bhai, I think we are almost nearing the end of the session. Before I end, I'd like to thank all the participants and all the set of people who have actually come together from my team, and even the trainer. I think, Sumit, we put in a lot of a discussion before we actually put this presentation forward. You had multiple rounds of deliberations with yourself and then with me, and I think it's come out very well, received well by the audience. I really thank you for taking out time, Sumit, and contributing to the exchange efforts, trying to connect the physical market to our platforms, and also enabling them to undertake price risk measures. And the objective, I'm sure we are nearing the objective of enabling all the participants to equip themselves with techniques, with tools to actually work on a hedge policy for their businesses, no matter how small or big these businesses would be. Price risk can do, I think, can do crazy amount of damage to any scale of business. So I'd like to thank all the participants, my team, Sumit specifically for taking out time and making the effort to put this presentation up. In the next module, which is next week, we'll be having a small assessment
Sumit, we'll probably be needing your help on the assessment as well, because we need to give out certifications to people who will actually qualify to get a certificate once, for us also to assess that they've understood the concept well. And we'll also be having an industry expert talk on that event next week. So I welcome all of you, all the participants who've been part of this 2-module discussion, to who have engaged with us. We'll also prefer if you give us a feedback. Kalpesh has already sent out forms. Please send us your feedback on those forms. We'd like to send you these details and presentations, both from Nidhi's end and from Sumit's end, to go through, so that one, you are prepared for our 3rd module, where we'll have an industry interaction and a brief multiple choice kind of assessment, post which we will be sending across Okay. Participation Yeah, certificates. Kavita, sorry to interrupt here, because the participants are very much connected with us now. And again, all the participants, please, this is the last question, and this is relevant to exchange only. That's why I want to put here. Any possibility of the sudden crash in the forward and the future prices? A huge difference from the spot. As in case of the share market, it's happened sometimes. So what effective role exchange is playing in this? So it is, I think, robust mechanism and all the precautions we are taking. Mr. Kanodia is having the query on this. This is the last question. All the participants, Sorry, please. Kalpesh bhai, I didn't understand. I think, if correct me if I'm wrong, what he said is that difference between the forward prices and the future prices and the spot prices, what is the exchange doing to bridge that gap? If there is sudden crash in one of the market, and if the gap is becoming too huge, then what is the mechanism and what the exchange plays the role? Sir, when you're talking about a sudden crash, see, the exchange prices always replicate what's happening in the physical market, because when you're talking about the exchange is only 2% in case of, say, soybean, or I would say 2 to 3% in case of soybean, as compared to the large physical market. So the correction is something which naturally comes in. And the exchange, on the other hand, if there is any anomaly at the exchange on the regulatory side, there are already, an extreme robust risk management mechanism in terms of margins, in terms of concentration margins, which automatically correct any kind of anomaly that is there on the exchange platform, even within that 3% or 2% that we are a part of, that we currently are a part of. The physical market. So I don't think there is any need of concern on that account, because as an exchange, and with a very strong regulator, and with something, and with, where all these things have been deliberated multiple number of times and have been simulated, and hence we have now extremely robust risk management mechanism with us. So with this, we should conclude now. Please have a sum up, and let's. Yes. All the So participants on be the there next for event. the next second, there's a 3rd module event. Yeah, Sumit, you want to say something? No, thank you very much. Thank you for taking time out. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.